बेस्ट एवरेस्ट कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस प्रॉमिस इसका पार्टनर। नमस्कार सारा दिन सहित मु रश्मि रंजन आपण को स्वागत करुछे। प्रथमे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खिमजी ज्वेलर्स because precious moments are priceless. Kimchi, jewelers since 1936. जीएसटी काउंसिल बैठक रे बड़ निष्पत्ति। सारा देश में लागू हेबो दुईटी टैक्स स्लैब। विभिन्न सामग्री उपरे लागू हेबो 18 और 5% जीएसटी, हटिला 12% एवं 28% जीएसटी। आसंता 22 तारिख रु लागू हेबो नुआ नियम। शौखीन सामग्री और तंबाकूजात द्रव्य उपरे 40% स्लैब लागू। उत्कल विश्वविद्यालय सीमांत पिला अणछात्र दौरात्म्य। कुलपति और सुपरिटेडेंट को घेरिले दुर्बृत्त। हॉस्टेल भितर ताला पकाई कले गाली गुलज। उच्च शिक्षा मंत्री कहिले आईन अनुसार नियाजिब एक्शन। घरोई स्कूल नारे सांघातिक अभियोग। गणित आसलानी बोली 9 वर्षर छात्री आखि को मारी नष्ट करदेले शिक्षयित्री। डुमडुमा फेज 2 रे थिबा घरोई स्कूल रे अघटन। अभियोग आधार रे खंडगिरी थाना पुलिस रो तदंत आरंभ। श्रीमंदिर नीति दर्शन और सुरक्षा को गुरुत्व। नाटमंडप में खूब शीघ्र आरंभ हेबो धाड़ी दर्शन। परिचालना कमिटी बैठक रे मिलिला अनुमोदन। दिव्यांगों पाई भी हेबो राम। प्रथम थर श्रीमंदिर सुरक्षा गठन हेला सब कमिटी। दीघारे जगन्नाथ धाम शब्दर अपव्यवहार को कराजिबनी बर्दाश्त। कराजिबो आईनगत प्रतिकार। राज्य में नाही बन्या स्थिति। जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री सूचना। प्रमुख नदी गुड़िक कम रही जलस्तर। विपद संकेत तले हेउछि प्रवाहित। हीराकुद 6टी और रेंगाली रे खोला अछि गोटिए गेट। संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। जीएसटी काउंसिल बैठक रे बड़ निष्पत्ति। सारा देश में लागू हेबो दुईटी टैक्स स्लैब। हटिला 12% और 28% जीएसटी। विभिन्न सामग्री उपरे लागू हेबो 18 और 5% जीएसटी। नुआ दिल्ली रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षतार बसिथिला बैठक। ओडिशा सह विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री जोग देइथिले। आसंता 22 तारिख रु लागू हेबो एही नुआ नियम। शौखीन सामग्री और तंबाकूजात द्रव्य उपरे 40% स्लैब लागू हेबो। बड़ खबर जीएसटी काउंसिल बैठक रे बड़ निष्पत्ति। सारा देश में लागू हेबो दुईटी टैक्स स्लैब। हटिला 12% और 28% जीएसटी। विभिन्न सामग्री उपरे लागू हेबो 18 और 5% जीएसटी। अर्थनीति विशेषज्ञ त्रिनाथ लेंका फोन लाइन रे उपस्थित रहउछंती। श्रीजुक्त लेंका आपण को स्वागत अर्गस न्यूज को। श्रीजुक्त लेंका, जेतेबेले स्वाधीनता दिवस रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला रु कहिथिले जे आमे किछि रिफॉर्म आनिया को जाउछु जीएसटी रे, सेतेबेलु कल्पना जल्पना आरंभ हो जाइथिला जे 4टी स्लैब रु 2टी स्लैब काटी दिया जिवो, अर्थात 18% 5% लागू हेबो। ये वर्तमान समय लागू होबा पई जाउछि, केमति देखंती? नमस्कार, एटा को आमे स्वागत जणेबा एवं कांग्रेचुलेट करिबा, कारण एथिरे इकोनॉमी पई और बिजनेस पई एंटरप्रेन्योर्स मानक पई सबुठु बड़ सहज हबो। कारण जो आगु एते गुडा स्लैब रहउतला ता भितरे बिजनेस बहुत किछि भी एंटरप्रेन्योर्स माने प्रॉब्लम फेस करथिले। और एथिरे आहुरी गोटे माने सुविधा हला जे जदि आमे देखिबा जो 5% और 18% ही खाली रहला। 12% 28% जेतु एलिमिनेट हला। बहुत किसी अत्यावश्यक जिनिस से सब कमी आसो कमिबो बोली जहाँ आकलन करा जायछि। एवं एथिरे आपणकर जदि देखिबे जो शौखीन सामग्री बा आपणकर तंबाकू जातीय द्रव्य रे सेथिरे 40% जोटा कि स्पेशल रेट रखा जायछि, तो सेथिरे किछि कंप्रोमाइज करा जायनि। तो एटा नियाती जदि देखिबा पाखि केंद्र सरकार को 93,000 करोड़ रो रेवेन्यू लॉस जहाँ एठी आकलन करा जायछि, किंतु ताको हमें कंपेनसेट करबा एही हिसाब रे जेतेबेले रेट कमिबो कंजप्शन बढ़िबो। जेतो हमर 144 करोड़ लोक होउचंती पॉपुलेशन होउचंती हमर कंज्यूमर, तेणु जेतेबेले कंज्यूम करिवे इकोनॉमी को सेटा सुहाइबो एवं हमर जीडीपी रे हमको सपोर्ट करि परिबो। तेणु ए निष्पत्ति को आम समस्ते आगु आम वेट करथिले
जे केते जल्दी यार डिसीजन आसबो जोटा कि 3 और 4 2 दिन थिला किंतु आज गोटे दिन रे मीटिंग शेष होईची एवं आसंता काली पे किछि मीटिंग भी रखा जाई नाही तेणु एहा द्वारा मध्यमित श्रेणी ओके श्रीजुक्त लेंका ये 18% एवं 5% जीएसटी जेतेबेले लागू हेबो साधारण जनतांक उपरे ये प्रभाव केमती पड़िबो देखो एटा होची साधारण जनता ही यार फायदा पाई परिबे सबुठ बेसी पाइबे जेतु अत्यावश्यक जिनिस एगुडा सब आपनकर लोअर लेवल को आसुची तेणु जेतु 93,000 करोड़ रेवेन्यू लॉस आसुची आपण भावतो एटा शौकीन जिनिस ऊपर आसुनी अत्यावश्यक जिनिस ऊपर जो लोक माननको जो मैंने आम आदमी कथा आम कहूचे साधारण मनीष को ही फायदा हम तार बेनिफिट पाइबे माने कम रेट रे जिनस किनि ओके कहि परिबा जदी कोठी ना कोठी गोटे दरदाम वृद्धिर गोटे पॉकेट को जो बाधिला भली अत्यावश्यक सामग्री ऊपर दरदाम थिला कोठी ना कोठी तार ह्रास मध्य देखिबा को मिलिबो निश्चय कारण एथिरे जदी हमें देखिबा जहाँ कह जाउची टूथपेस्ट है आपनकर शैम्पू है कि आपनकर घर जो अदर जो जिनिस पाके 175 प्रोडक्ट ऊपर जहाँ आकलन करला एग्जैक्ट डिटेल्स आसिले मीडिया ब्रीफिंग आसिले हमें तो डिटेल्स पाई परिबा तो हमें समस्त को अपेक्षा कर एग्जैक्ट प्रोडक्ट कौन सब रहिबो तेणु एथिरे अत्यावश्यक जिनिस ही आथिरे रेट कम होची आउ एथिरे रूरल कंजम्पशन को बढ़िया कह जाई माने प्रयास रखा जाई जेतु आपनकर ट्रम्प टैरिफ मारा होईची हमर जीडीपी को जो प्रहार करूथिला तेणु एथिरे हमर जीडीपी को ऊपर को नब बोली आम एथिरे समस्त आशावादी अच्छु पाके 0.5 to 0.6% जीडीपी रे हमर एटा ऐड करिवो जदि भी हम रेवेन्यू लॉस हेले भी हम अदर वे रे रेवेन्यू के हमें कंपेंसेट करि परिबा जहा एठी आकलन करा जाउची निश्चित भाव रे श्रीजुक्त लेंका को सेक्टर एथिरे अधिक भाव रे प्रभावित हेबो बोली आपण भाबुचंती देखो कंज्यूमर माने आपण जो देखिए एफएमसीजी सेक्टर सबुठु बेसी बेनिफिट पाई परिबे एफएमसीजी सेक्टर सहित से बेसी बेनिफिट पाई परिबे इलेक्ट्रिक व्हीकल ऊपर जहा को जाउतला जे आपनकर ईवी सेक्टर रे आपनकर से हाइब्रिड सेक्टर रे सेतिरे सेमाने सेतिर बेनिफिट पाई परिबे तण वर्तमान मीडिया ब्रीफिंग आसुची हमें देखिबा फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट तापर हमें ऊपर डिस्कशन करि परिबा बहुत बहुत धन्यवाद ओके श्रीजुक्त लेंका आउ गोटे कथा भी जानिया पई चाहिबी जो लघु उद्योग छोट व्यापारी माने रहिचंती सेमानंकर व्यवसाय रे किछि परिवर्तन देखिबा को मिलिबो कि सेमानंकु कोन क्षति सहिबा पई पड़ी पारे कि ये 18% एवं 5% जीएसटी लागू हेबा फल रे देखो जो मैंने एसएमई बा एमएसएमई अच्छी से लॉस पाइबेनी कारण से आप भावतु जीएसटी जो कलेक्शन करते सरकार डिपोजिट होता तेणु माने लाभ लॉस सेमती किसी ना से बर सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई हो पारे बिजनेस से आगु को बहुत भल भाव में बिजनेस भी करेंगे प्रोडक्शन बेसी भी करेंगे प्रोडक्ट बेसी मार्केट रे सेल करेंगे निश्चित भाव में जितेबाला 4टी स्लाब रु 2टी स्लाब को खसाई दिया जाइछि लॉन्ग टर्म अर्थनीति उपर भारतर यार प्रभाव आपण केमती देखंती देखो जहाँ आम आकलन करुचे 0.5 to 0.6% जीडीपी अपवार्ड जीव तेणु से आमर समस्या आशावादी अच्छे जे जो इकोनॉमी को बूस्ट करने रूरल कंजम्पशन को बूस्ट करने प्रयास रखा जाइछि तेणु एथिरे late we concluded the meeting and from there we have come here and let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues. And we have ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man,
Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council. Every finance minister who attended the GST Council today, there was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए, इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए, हमारे एमओएस कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर चेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम। सम्राट चौधरी जी वर्कड ऑन द रेट रैशनलाइजेशन, and not only the chair but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ। There is also of course trade facilitation measures and process reform, वो भी इसमें शामिल है, जिससे enhanced verification measures which are aimed at curbing fraud have led to complex documentation, उसको भी simplify करने का, और data analysis वगैरह है। process reform के ऊपर मैं विस्तार से आपके question answer के समय में जवाब दूंगी, मगर primarily I'm sure all your interest is to know where is what, which one comes down in rate. उसमें एक just indicate करते हुए I'll stop my input. If revenue secretary has anything more he can add. उसके बाद आपके question answer करते हुए हम बाकी सबको cover करेंगे। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5, इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%, इसमें
मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं. एयर conditioning machines, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. Again from 12 to 5 handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही है. Reduction of cement from 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you are interested in knowing about automotive sector, about which you have been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion. That's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste to energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters and systems and so on.
Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. I think I'll leave it there. We'll answer questions. Thank you, ma'am. Now we move on to the question There's and answer one more. session. Sorry, I'm getting tempted to say one last thing. There are 4 points which I want you all to take into consideration. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September except for these tobacco related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable till such a time we completely repay the loan.
Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the date, actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. Yeah, please. Thank you, ma'am. Before we start the question answer session, please introduce yourself before asking the question. Also speak into the mic because this is being live streamed, and also raise the placard. We will take the questions one by one. So, number 9. Ma'am, this is Priyansh from Money Control. I wanted to ask what is the possible revenue loss that has been estimated due to the rate cuts? And secondly, for the states, has there been any discussion on how the revenue will be compensated to them? ये जीएसटी काउंसिल बैठक रे बड़ निष्पत्ति होईछि। सारा देश रे लागू हेबा पई जाउछि दुईटी टैक्स स्लैब हटिला 12% एवं 28% जीएसटी। दर्शक बंधु पूर्वर 4टी स्लैब जीएसटी उपरे समस्तंक ठारू कर आदाय करा जाउथला, अर्थात टैक्स आदाय करा जाउथला, किंतु दुईटी टैक्स स्लैब अर्थात 12% एवं 28% जीएसटी टैक्स स्लैब को हटाई दिया जाइछि। केवल 18 एवं 5% जीएसटी स्लैब लागू करा जिवो। नुआ दिल्ली रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण का अध्यक्षता रे ये बैठक बसिथिला। ओडिशा सहित विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री जोग देथिले। कौन कौन महंगा हेबो, कौन कौन सस्ता हेबो से कथा हमें कहूछु। तेबे पान मसला, गुटका, जर्दा उपरे 40% जीएसटी लागि थिबारु से गुडिक महंगा होई पारे, अर्थात जेउ दर एबेठारु कंटिन्यू होउछि सेही दर उपरे आहुरी 40% टैक्स लागिबो। Where we had all the segregated data. What I would also request is to have to appreciate this exercise better. It's important to also understand why looking at a particular number of revenue implication and highlighting it in a manner which is not proper may not present the correct picture of this exercise. The reason being, one, typically the rate rationalization exercise would result in buoyancy effects. We do expect, as mathematically one may calculate based on consumption of 23-24, but economically that is not how outcomes will evolve. And we do expect buoyancy to play a major role because of this rate rationalization exercise in enhancing the revenue. In addition, there is also an effect on the consumer behavior. What he spends on and how much does get influenced by price, which is going to be expected to get positively influenced by this exercise. We also expect compliance to improve due to this exercise. Madam explained to you how rates which were at different levels, where classification issues would be rampant, like sectors like food or transport, auto parts, etc. Once rationalized, it will improve and enhance compliance, because many of these disputes would not necessarily result in revenues, but would linger on and would end up having a lot of resources, both of the business and the department, in struggling to settle those disputes. So compliance would also have a very positive effect on the revenue generation. Finally, there is a technicality that when the rates change, the rate of the value chain itself changes, and tax, is paid through ITC and cash, and the actual implication of that will have to be worked out. I would just like to highlight a number from before just to explain how these changes do play out. For example, when earlier the average rates were around 15.5 in the earlier part of the GST, the compliance in the form of GSTR TB was around 85 to 90%. Now the compliance has improved to almost 97% as the rates have come down. We do expect these positive changes will have and we believe that in this entire exercise will be fiscally sustainable both for center as well as the states. 54. Yeah, good evening, ma'am. Shishir from Hindu Business Line. My question is about the anti-profiteering, because now so much rate reduction is there and we do not have the anti-profiteering mechanism. As of now, we understand that GST 80 can take only the pending cases and the
cases directed by the courts. So what kind of mechanism we are going to have? And the second question is about the clarification on the revenue implication, that 48,000 crore is on annualized basis or just for the FY26, ma'am? On the first question of anti-profiteering, just to give you a couple of statistics, that since inception, under the arrangement of anti-profiteering, which is no longer in place now, only around 704 cases were registered with the authority, and 60% of the cases were initiated within the first 3 to 4 years of implementation. And the total profiteering amount that was alleged was around 4,362 crores in these 704 cases. So we expect that last time too, these data shows that industry has largely passed on the benefits of rate cut. At that time too, the industry made public statements and committed, and you would have heard and you would have seen that a lot of industries have already come out and have committed that they will be transmitting this benefits too. Administratively, both at the state level as well as at the CBIC level, we will definitely be engaging with the industry and seeing to it that the benefits to the consumer, as is planned as per the exercise, is going to be transmitted to the consumers. And we do expect that since it is to the benefit of the businesses too, it is going to happen eventually. On the issue of the revenue loss, I think the question, probably you didn't appreciate the point I made the last time. It is difficult to look at these issues mathematically. So I would rather, we have done a data based on a historical number, that is 23-24 consumption. How will 26 happen will obviously depend on how consumption evolves. And we, as I said, are confident that this is going to be fiscally sustainable. This is Deepshika from the Economic Times. One just follow-up to the revenue question. What would be what is the revenue neutral rate after these reductions? And also on compensation cess, what happens after the loans are paid, especially on the tobacco products and high-end luxury products? Is there any decision on the future of this cess? Will there be something else coming in its place, or? I'll have the Revenue Secretary tell you about the revenue neutral rates. But on the compensation cess, we've discussed it today very clearly. It will continue on those goods which I mentioned, the tobacco and tobacco-related products, over and above the 28%, which is the system which prevails now, till such a time that we repay the loan. And after that, there will not be a cess. And those items which were with compensation cess have already been proposed to be at 40% because they are sin goods rate. They are, as I said, 40% is not part of the scheme of things, it's at the extreme. No other good will go there except for these tobacco-related products. So they will be, the incidence will be on them at 40%. Revenue neutrality. No, I didn't get the question. Revenue neutral would mean what? No, what? Can you explain your question? What revenue neutral would mean? Down from 15.5, the average rate, what would it be after these reductions? It will obviously depend upon how the transactions happen. So consumption, I am assuming what you are saying is the total value of transaction total tax collected divided by total value of transaction. So that is something one can calculate historically. For the future, as I said, we expect a lot of effects of buoyancy, compliance, consumer behavior. So this number is going to be obviously something which we will get to as we reach there. 238. Anshul Magazine from Indian Express. Just a clarification on the tobacco part, because I believe when GST was rolled out, Centre had the powers to levy NCCD on tobacco. So how will it get levied on, say, something like pan masala? If you could elaborate that. And secondly, was there any decision regarding electric vehicles? Because that was also one of the proposals submitted by the GOM. See, on the pan masala, tobacco and everything else,
Under the GST, till such a time the loan is repaid, as I said, the 28% plus the compensation cess will run. Once I clear the loan, they all come to 40%, and that's what is the GST. Any? EV remains at where it was. Yes, it remains at where it was, 5. 214. सवाल चूंकि अभी काफ़ी खबर चल रही थी कि जो 2500 जो अभी ब्रांडेड 1000 रुपये से ऊपर का जो शर्ट एंड फुटवेयर्स है, मैं राजीव हूँ सर दैनिक जागरण से, तो उस पे उसको 2500 उसकी सीमा की जा रही थी, जो 2500 से ऊपर है उनको उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो ऐसा कुछ हुआ या अब सब पे जो भी फुटवेयर और गारमेंट्स होंगे 1000 रुपये से ऊपर के भी उन पे भी सिर्फ 5% ही लगेगा, इस पे कुछ फैसला हुआ? नंबर 1। नंबर 2 सर कि स्मॉल कार मिड साइज कार, तो क्या इसमें 1200 सीसी से ऊपर वाले सभी कार पे 40% लगेगा? जहाँ तक फुटवेयर का सवाल है, आज के दिन 2 रेट्स थे, 1000 रुपये से कम वालों के ऊपर 12% और 1000 रुपये से ऊपर वाले के ऊपर 18% लगता था। सो जो चेंज किए गए हैं, जैसे आपको ज्ञात है कि मैडम ने पहले बताया कि 12% का रेट अभी नहीं है, तो 2 रेट जो अभी हैं वो 5 और 18 के हैं। 5% पे जो 2500 से कम वाली वस्तुएं वाले फुटवेयर हैं और 18% पे जो 2500 से ऊपर वाली वस्तुएं। आपका दूसरा सवाल किस इशू से था? सीसी। हाँ, मैडम ने आपको बताया कि छोटी कारें जो हैं वो 18 पे होंगी और बाकी सारी कारें जो हैं वो 40 पे होंगी। डेफिनेशन तो आई थॉट वो तो डिपार्टमेंट MHRT मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का है। पेट्रोल की 1200 सीसी और डीजल की 1500 सीसी होती है और उसके साथ शायद लेंथ का भी एक लिमिटेशन होता है, तो जो उनका रेगुलेशंस के हिसाब से छोटी कारें हैं वो हमारी 18 पे रहेंगी। हम लोग अलग से कोई नया डेफिनेशन उसका नहीं बना रहे हैं। 45. I had a related question on hotels and on air travel. Again, there were 2 classifications there. So if, and I suppose, I think all these would be in the detailed press release that you'd be issuing, but if you could just help us. 269. Thank you, ma'am. This is Girish from Mint. Ma'am, some states had suggested that there could be a new duty imposed on, items on the 28%, which will move to 40%. Has that been considered? And secondly, ma'am, there is no cess applicable on high-end cars, which has moved to 40%, right, ma'am? Once an item has moved to 40%, there's nothing more to be added. Okay, ma'am. Because the maximum rate which you can levy on a car, on any item is 40%. Okay. And in the 40% category, we put all the tobacco and tobacco-related sin goods and super luxury items only. Number 3. Hello ma'am, this is Priyoshmita from Informist Media. Ma'am, first I wanted a clarification. I was still looking at discontinuing compensation cess around November, as in, is that the timeline we are following to repay the loans? And secondly, states had pitched for some kind of a mechanism to compensate them after the rate changes are effective because of the revenue loss. So has there been any discussion, and is the center looking at something on those lines? Thank you. I think I've mentioned it clearly, till such a time that the loans don't get repaid. We will continue with the 28% items and the compensation cess collection over it, particularly only those items which I read out, tobacco-related products, and they will continue till such a time I repay the loan, which is the council has authorized the finance minister to stop that collection the moment the loan is repaid. I cannot speculate on the time now whether it is October or November, but it will be well within, I think, this calendar year.
Number 2. I think, first of all, I would like to request the media to look at the GST Council as where the center and the states are seated together. I mentioned this in the council also. The center may be a 1/3 partner, the states put together can be 2/3 partner. But we are all in it together. So anything that which is gained or lost is for everybody. It's not as though states have lost, the center is not gained. If all of us have lost, all of us have lost. And I don't think, and I'm glad that the Revenue Secretary had made this point in the council, it's a revenue instance. The incidence is what is the matter. It's not a static situation. Once the rates have come down per the economic theory that you may want to quote, the buoyancy goes up. People come out to buy more. And therefore, this discussion has happened in today's council. And I have put this argument before, that the center and the states are seated equally. And any gain or any foregone, none of that is perceived, because when rates are coming down, we expect the market to be more buoyant, people to come out and spend more. However, all of us are sitting there together. Compensate for states' loss, even center is losing, if anything. Center loses more in a way. Because 50-50, you divide from my 50, another 41 goes back to the states. So I want the media, particularly those who are covering the economy, finance ministry, to understand in the GST Council, the center and the states are together in it. Nobody is a donor and nobody is a donee within the GST Council. Number 2. Pallavi from... Can I just supplement, because this issue has come from many. So our earlier request was, there are two parts to this issue, and I would just request the indulgence of the media also on this. This repeated use of the word called revenue loss. You know, so obviously somebody has lost to somebody or something to that effect. Kindly understand, this is a tax rationalization exercise which is resulting in reduction of rates of taxes to be paid, let us say, by a common man. Rates paid by on food, on health, on agricultural implements. आपण ये चित्र देखुथिले जीएसटी काउंसिल बैठक पर विवृत्ति रखा जाउथला अर्थ मंत्रालय पक्षरु किभली भाबरे टैक्स स्लैब रे परिवर्तन होईछि एवं ये टैक्स रिडक्शन होईछि कोठना कोठी पूरापूरी पीपल फ्रेंडली बोली आमे कहि परिबा आलोचना करिबा सुधाकर पंडा संपादक ओडिशा व्यवसायी महासंघ आम सहित उपस्थित रहउछन्ती फोन लाइन रे श्रीजुक्त पंडा आपनकु स्वागत श्रीजुक्त पंडा जणे व्यवसायी हिसाब रे आपण याकु केमति देखिबे कारण जहां सब टैक्स रिडक्शन हेछि पूरापूरी पीपल फ्रेंडली नहीं ये गोटे माने जनतांकर पाई गोटे बड़ शुभ खबर सरकार बहुत गोटे बड़ पदक्षेप लेइछन्ती अनेक जिनस 12% रू 5% आसी 18% रू 5% आसी 12% रू 0% अनेक जगह अच्छी तेणु ये जो बर्तमान रिफॉर्म होती ये गोटे निश्चित भाव निश्चित किंतु सुजुक्त पंडा गोटे कथा होची जहाँ सब घरे व्यवहार करा जाउथला जेमति कि नित्य व्यवहार्य टूथपेस्ट ठारू आरंभ करी लैट्रिन रे व्यवहार होउथबा साबुन पर्यंत जो सब 5% जीएसटी सय रे एया को सब अंतर्भुक्त करा जाइछि पूर्वरु कोन होउथला वर्तमान कोन होबा या फल रे पूर्व देखंतु अनेक जगह से 12% थिला केतक जिनस 18% थिला वर्तमान ताको 5% गणा रही देखो गोटे जिनस जतिकिटा होउछि वर्तमान सेतिकिटा ठीक अच्छी वर्तमान आम समय अनुसार वर्तमान आम फाइनान्स मिनिस्टर कहले ये गोटे समय आह्वान थिला वास्तविक ये गोटे समय आह्वान अच्छी आगामी दिन में जोड़ाक बाकी रही जोड़ाक आउ किसी परिवर्तन करार अच्छी पुणी सरकार कनसीडर करेंगे पुणी आम डिमांड देवु सरकार निश्चित भाव कनसीडर करें कि बर्तमान जहाँ बर्तमान समय पर ये
गोटे उचित पदक्षेप कहले अत्युक्ति हम ना। ओके श्रीजुक्त पंडा जो माने कंज्यूमर अछंती जो माने खाउटी अछंती सेमानक पई ये केते बड़ आश्वस्तिकर खबर होई पारिबो कुहा जाय पारिबो? देखो एटार ये जो रेट कमिला ये जो टैक्स स्लैब रेट कमिला ये केवल कंज्यूमर देखो जिते जिनस सस्ता हम लोकंर क्रय शक्ति बढ़िबो एवं लोक अधिक अधिक जिनस किणिबे अधिक अधिक जिनस किणिला माने आपंकर फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाया पड़ो तो प्रोडक्शन बढ़ाया गले लोक एम्प्लॉयमेंट देवा पड़ो गोटे समय लोक एम्प्लॉयमेंट पाइबे प्रोडक्शन भी बढ़ो एवं आम जो जीडीपी अच्छी जीडीपी बढ़ी बढ़ी जीव तेणु यही परिस्थिति निश्चित व्यवसाय अनुरूप भाव में वृद्धि हम एक आपण भी भावती आज्ञा व्यवसाय अनुरूप भाव में वृद्धि हम निश्चित भाव व्यवसाय निश्चित भाव ये गोटे सकारात्मक परिवर्तन आनिबो केतोटी जिनस रही जोटा कि सरकार कंसीडर करना पुणी आम ओके श्रीजुक्त पंडा जो माने लघु उद्योग करिसंती किंबा छोट छोट दुकान देइसंती छोट छोट व्यवसाय रे लिप्त अछंती सेमानक ऊपर यार प्रभाव केते मात्रा रे पड़िबो बोली आपण भाबुछंती? देखो गोटे दिन रे बा गोटे पदक्षेप रे आमे सब क्लीन कर देबा सेटा हुए तो संभव न होई पारे जहाँ भी वर्तमान करछनी ठीक अछि अनेक जिनस आउरी भी बाकी अच्छी करबा पई परिवर्तन करबा पई सेटाक मध्य आमे सरकार ऊपर चाप सृष्टि करबा मु भावुचे आम बर्तमान जो प्राय 75-80% जो समस्या थिला से बर्तमान ये समस्या समाधान हो सारी आउ जो 15-20% समस्या अच्छे आम विभिन्न समय सरकार पाखे दाबी रखिपर एवं सरकार कंसीडर करेंगे ये आशावादी आम अच्छे निश्चित भाव में वर्तमान समय जदि कहबा जो 40% जीएसटी रखा जाइछि केवल तंबाकू आइटम उपरे एवं लग्जरी आइटम उपरे ता उपरे केमती देखुचंती सरकार से जो टैक्स स्लैब को कहीं परिवर्तन करिसंती कोठना कोठी कंजप्शन को कमेवा पई आपण देखंतु आमे सब देखुचे से धनी लोक धनी रु धनी ही चलती एवं गरीब लोक गरीब रु गरीब ही चलती ये जो टिकस से किसी धनी लोक जो पाखे पैसा अच्छी से जो जगह जो गाड़ी कहतु जहाँ यूज कर जी भी आप जो टबाको भी यूज कर टबाको यूज करने द्वारा से लोकर वार्षिक जी खर्च हो अधिका खर्च हो सरकारी राजस्व क्योर कर तेणु सी जब रेट बढ़ी जाऊँगी न खाଇବା दरकार तेणु सरकार गोटे इनडायरेक्टली रेट बढ़िया पर तार कंजप्शन कमेवाई गोटे प्रकार चेष्टा कर तेणु से स्वागत करूँ निश्चित भाव में ये कौटिना कौटी पीपुल फ्रेंडली बोली आम कहीपर जितेबले जीएसटी काउंसिल बैठक रे ये बड़ निष्पत्ति होईची सारा देश में 4टी टैक्स स्लैब को हटाई दिया जाए 2टी लागू करा गोटे 18 और गोटे 5% एने आलोचना करुले श्रीजुक्त सुधाकर पंडा संपादक ओडिशा व्यवसायी महासंघ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त पंडा आपणकर समस्त आलोचना अगस्ट 15 स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला रे कही सारी जे दीपावली पूर्वर गोटे बड़ भेटी देवा जाउछंती एवं टैक्सेशन रे गोटे बड़ रिहाती मिलिबो सारा देशवासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेतेबेले कौन कहिथिले नजर पकाई नियंतु। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई हमारे लघु उद्यमी इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। समय शेष होईछि सारा दिन को इठ रखिबा विदा दियंतु। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर केमती देखंती नमस्कार एटा को आमे स्वागत जणेबा एवं कांग्रेचुलेट करिबा कारण एथिरे इकोनॉमी पाई और बिजनेस पाई एंटरप्रेन्योर्स मानक पाई सबुठु बड़ा सहज हबो कारण जो आगु एते गुडा स्लैब रहउतला ता भितरे बिजनेस बहुत किसी भी एंटरप्रेन्योर्स माने प्रॉब्लम फेस करथिले और एथिरे आहुरी गोटे माने सुविधा हला जे जदि आमे देखिबा जो 5% और 18% ही खाली रहला 12% 28% जेतु एलिमिनेट हला
बहुत किसी अत्यावश्यक जिनिस से सब कमी कमिबो जहाँ आकलन करा जायछि एवं एथिरे आपनकर जदि देखिबे जो शौकीन सामग्री बा आपनकर तंबाकू जातीय द्रव्य रे सेथिरे 40% जोटा कि स्पेशल रेट रखा जायछि त सेथिरे किछि कंप्रोमाइज करा जायनि तो एटा नियाती जदि देखिबा केंद्र सरकार को 93,000 करोड़ रो रेवेन्यू लॉस जहाँ एठी आकलन करा जायछि किंतु ताको हमें कंपेनसेट करबा एही हिसाब रे जेतेबेले रेट कमिबो कंजप्शन बढ़िबो जेतो हमर 144 करोड़ लोक होउचंती पॉपुलेशन होउचंती हमर कंज्यूमर तेणु जो कंज्यूम करेंगे इकोनॉमी को सेटा सुहाइब एवं आम जीडीपी रे हमको सपोर्ट कर पारिबो तेणु एथिरे ए निष्पत्ति को हमें समस्ते आगु हमें वेट करथिले जे केते जल्दी यार डिसीजन आसीबो जोटा कि 3 और 4 2 दिन थिला किंतु आज गोटे दिन मीटिंग शेष होईछि एवं आसंता काली पे किछि मीटिंग भी रखा जाय नाही तेणु एहा द्वारा मध्यमित श्रेणी ओके श्रीजुक्त लेंका ये 18% एवं 5% जीएसटी जेतेबेले लागू हेबो साधारण जनतांक उपरे ये प्रभाव केमती पड़िबो देखंतु एटा होछि साधारण जनता ही यार